So let us start with the numericals in this chapter. So first of all, we'll just discuss all the formulae from this chapter. इस चैप्टर के अंदर कौन से फॉर्मूले है तो वो एक बार हम रिवाइज करेंगे फटाफट ब्रीफ में. ओके, यू कैन सी दिस. देखो, सबसे पहले हमने जो फॉर्मूला देखा था तो इस चैप्टर के अंदर वो है डिस्प्लेसमेंट के बारे में. बराबर है, डिस्प्लेसमेंट. व्हाट इज दिस फॉर्मूला फॉर डिस्प्लेसमेंट? यस, डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या फॉर्मूला है? तो देखो, डिस्प्लेसमेंट के लिए हम या तो डेल्टा एक्स से उसको डिनोट करते हैं, या कभी डेल्टा एस से भी उसको डिनोट करते हैं, या डेल्टा आर से भी डिनोट करते हैं. तीनों का मतलब एक ही होता है, डिस्प्लेसमेंट ही होता है. बट फॉर्मूला के जहां तक सवाल है तो यहाँ पे वन डायमेंशनल में अगर है, इन वन डायमेंशनल मोशन, द डिस्प्लेसमेंट इज गिवन बाय द फॉर्मूला डेल्टा एक्स, which is going to be actually equal to x2 minus x1. It's that simple. Okay, x2 minus x1. Obviously it should be accompanied by I bar, right, if it is in x direction. And डिस्प्लेसमेंट का और एक फॉर्मूला है, अगर टू डायमेंशन में अगर बॉडी है तो उस केस में डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या बनता है? डेल्टा आर बार is going to be actually equal to delta x into I bar plus delta y into j bar. This is the formula for displacement. And actually, if we want to find out the magnitude of this displacement, then we can get it as delta r bar का mod, जो कि बनता है root of, here it is going to be delta x का whole square plus delta y का square, right? So this is the formula for displacement. Yes. Now we'll see about the velocity. तो velocity में भी हमने देखा दो टाइप के velocities होते हैं. एक होता है average velocity, करेक्ट है, average velocity, और दूसरा होता है instantaneous velocity, right? So average velocity के लिए क्या फॉर्मूला है हमारे पास? Average velocity v average is actually given by the total distance traveled upon total time. Okay, so we can express it as the total distance traveled, मतलब ही delta s उसको हम बोल सकते हैं, delta s, and that is to be divided by delta t, no doubt. And what about the instantaneous velocity? So the instantaneous velocity here will actually be equal to v, which is going to be equal to ds by dt. Okay, ds by dt, or we can also call it as dr bar by dt, which can also be written to be equal to. अच्छा, अभी अगर ये वन डायमेंशनल में अगर है तो उस केस में ये वेलोसिटी जो है, तो वेलोसिटी का एक फॉर्मूला हमको मिल जाएगा dx by dt. इट्स दैट सिंपल. बट इफ देयर इज टू डायमेंशंस, तो टू डायमेंशन में अगर हम है तो उस केस में वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी इन वेक्टर फॉर्म कैन बी ऑब्टेन्ड टू बी एक्चुअली इक्वल टू dx by dt into I bar plus here it is dy by dt into j bar. Okay, तो ये फॉर्मूला बनता है वेलोसिटी के लिए इन टर्म्स ऑफ, इन केस ऑफ टू डायमेंशंस. Whenever there is a two-dimensional motion, the velocity can be found out by this formula. Remember, and actually this v bar can be written as vx into I bar plus vy into j bar. Okay, and if you want to find out the magnitude of this velocity vector, then we can get it as mod of v bar is going to be equal to root of vx square plus vy square. करेक्ट है? Yes. So this is actually going to be the formula for instantaneous velocity, right? Next is about the acceleration. So what is acceleration? We see acceleration के लिए उसमें भी दो आते हैं, एक होता है average और दूसरा होता है instantaneous. So if you talk about average acceleration, so a average can be written to be equal to delta v upon delta t, which can also be written as v minus u upon t. Okay, और v2 minus v1 upon t2 minus t1, वो भी उसका ही अलग फॉर्म है.
नो डाउट. बट अगेन इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन हियर. ओके, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन अगर हमको चाहिए तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको? तो उसके लिए फॉर्मूला बनेगा a विच इज इक्वल टू dv by dt. अगर वन डायमेंशन में है तो नो डाउट इट्स गोइंग टू बी dv by dt, but if it is in two dimensions then a bar will actually be equal to dv bar by dt, which includes actually d by dt of vx bar. Okay, vx into I bar plus dvy by dt upon into j bar. Okay, ये बनता है पूरा acceleration. This is the derivative of x component of velocity, and this is actually the derivative of y component of velocity. Remember. Okay, and this can also be written as ax into I bar plus ay into j bar. Correct. And if you want to find out the magnitude of this instantaneous acceleration, then we can get this instantaneous acceleration in magnitude to be equal to root of ax square plus ay square. Correct. So this is going to be the formula for magnitude of instantaneous acceleration. Remember. चलो ठीक है, तो ये हो गया acceleration के बारे में. Now you can see the concept of relative velocity, right? Relative velocity के बारे में क्या देखा था हमने? Velocity of an object A with respect to B is actually going to be equal to V1, VA minus VB. करेक्ट है? उसमें भी दो केसेस आते हैं जो जैसा कि हमने डिस्कस किया था. अगर VA पैरेलल है, VA और VB जो है, VA and VB are in the same direction. तो अगर सेम डायरेक्शन में है तो उस केस में क्या होता है, उन दोनों का रिलेटिव वेलोसिटी निकालने के लिए क्या करना पड़ता है हमको? उन दोनों के वेलोसिटीज का डिफरेंस लेना पड़ता है. बिल्कुल. और रिलेटिव वेलोसिटी जो है इट विल बी इक्वल टू VA plus VB in case when VA and VB are in opposite directions. करेक्ट है? तो अगर opposite directions में है तो उस केस में हमको उनका रिलेटिव वेलोसिटी निकालने के लिए उनकी एडिशन करनी पड़ेगी, और अगर सेम डायरेक्शन में है तो सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा. बट हियर वी कैन अंडरस्टैंड दैट relative velocity in general, in case when the two velocities are neither parallel nor opposite, so in that case the velocity of A with respect to B, okay, relative velocity of A with respect to B can be obtained to be actually equal to VA bar minus VB bar, where this vector subtraction is to be carried out by triangle law or parallelogram law, as we know already done in the vectors. तो vectors के अंदर जो हमने addition subtraction सीखा है तो वो हमको यूज करना होगा, तो उससे ही हमको ये velocity निकालना होगा. Just revise all this formulae for 2 minutes. Yes, I hope you have revised. Okay, so जैसा कि हम जानते हैं यहाँ पे कि velocity of A with respect to B in general can be found out by using the vector methods. The difference is to be found out by vector methods. ये जो VA बार में से VB बार सब्ट्रैक्ट करने का जो प्रोसेस है तो वो वेक्टर मेथड से हमको करना पड़ेगा, वेक्टर सब्ट्रैक्शन यूज करके हमको वो करना पड़ेगा. That is the concept of relative velocity. Now we'll see kinematical equations. Okay, all of you know the kinematical equations. There are 3 kinematical equations. So the first one is simply V is equal to U plus AT, where V stands for the final velocity, U stands for initial velocity, A is acceleration, and T is the time, no doubt. And this is in vector form, can be written as V bar is actually equal to U bar plus A bar into T. करेक्ट है? एंड कंपोनेंट फॉर्म में अगर देखेंगे ठीक से तो दो फॉर्म्स उसके मिलते हैं हमको. Vx is equal to Ux plus ax into t, and the second form y component to form जो है तो वो हमको मिल जाएगा यहाँ पे, that is going to be Vy is actually equal to Uy plus ay into t. करेक्ट है?
and the second kinematical equation here can be written as S that is equal to ut plus half a t square. This is in one dimension only, but in two dimensions the kinematical equation will be written as delta r bar. Okay, delta r bar, which is going to be equal to u bar into t plus half into a bar into t square. Correct है? So this becomes the formula for second kinematical equation in case of the planar motion or motion in plane or two-dimensional motion we say. And if we want to express it in terms of component form, तो component form में कैसे दिखाई देगा वो? तो वो हमको मिलेगा इस तरह से delta x, which is going to be equal to ux into t plus half into ax into t square. Correct है? And at the same time delta y actually will be equal to uy into t plus half into ay into t square. This is nothing but the component form, we can see clearly. Okay, then we go to the third kinematical equation. So in one dimensional motion it looks like v square is equal to u square plus 2as, no doubt. But in the two-dimensional form it will look like v mod of v bar ka whole square, which is going to be equal to mod of u bar ka whole square plus 2 times of the dot product of acceleration vector and the displacement vector a bar and delta r bar. इन दोनों का ये डॉट प्रोडक्ट है, याद रखो ठीक से. वेक्टर्स के अंदर जो हम डॉट प्रोडक्ट की बात करते हैं तो वो डॉट प्रोडक्ट यहाँ पे लिया हुआ है, तो ये बात अच्छी तरह से ध्यान में रखो. और फिर कंपोनेंट फॉर्म तो इजी है बहुत, we can understand. It will be vx square which is going to be equal to ux square plus 2 times of ax into delta x. करेक्ट है? ये हो गया x कंपोनेंट वाला फॉर्म. और y कंपोनेंट वाले फॉर्म में आएगा vy स्क्वायर is equal to uy square plus 2 times of ay into delta y. Okay, so this is going to be the y component form. So these are the three kinematical equations. Along with all these three kinematical equations, remember one more equation in one dimensional motion, that is going to be s, that is the displacement, is actually equal to average velocity, that is u plus v by 2 into time, that is t. Okay, and the same thing can be written in the planar motion form or vector form, that is delta r bar, which is going to be equal to u bar plus v bar upon 2 into t as it is. And in component form it will look like delta x is equal to ux plus vx upon 2 into time t. And in the y component form it will be delta y, which is equal to uy plus vy upon 2 into time t as it is. So this will be the component form. Yes, so all these are the three kinematic equations. But remember that the kinematical equations can be used only when, only and only when acceleration is going to be constant. ये अच्छी तरह से याद रख लो. Acceleration जब constant होगा तभी हमको kinematical equations use करने हैं. Otherwise no. Okay, if suppose the acceleration is not constant, if the formula of acceleration contains time or term in x or y, then we are not to use the kinematical equations. Then instead of that we'll have to use the differential form of these kinematical equations, that is a is equal to dv by dt and v is equal to dx by dt. ये differential forms हमको use करने होते हैं.
ओके, तो ये हो गया डिफरेंशियल फॉर्म्स. ओके, a is equal to dv by dt. This is the differential form of the first kinematical equation. Okay, and this v is equal to dx by dt is going to be the equation differential form of the second kinematic equation. And the third one can also be written in this way, a is equal to. अभी एक्चुअली देखो a इक्वल टू क्या होता है, तो हमको पता है कि a इज इक्वल टू dv by dt होता है, derivative of velocity with respect to time. Okay, but we can also express it as dv by dx into dx by dt. Okay, क्या किया हमने, dx से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, जिससे यहाँ पे ये जो dx by dt है तो वो एक्चुअली वेलोसिटी बन जाएगा, और हमको मिलेगा a इज इक्वल टू dv by dx into velocity, that is v. So we can also write it as a is equal to v into dv by dx, and actually this is going to be the differential form of the third kinematical equation. Remember, a is equal to v into dv by dx. This is the differential form of third kinematical equation. Remember, if acceleration is not constant, okay, अगर acceleration constant नहीं है तो उस केस में ये तीनों इक्वेशंस हमको यूज करने हैं, याद रखो ठीक से. ओके, सो दीज आर द थ्री काइनेमेटिक इक्वेशंस व्हेन एक्सेलरेशन इज नॉट कांस्टेंट. अच्छा, और वो भी कैसे, इसमें किधर भी हमको बार नहीं दिख रहा है, इसका मतलब वो वन डायमेंशनल मोशन के अंदर के है. अगर टू डायमेंशनल मोशन के अंदर के चाहिए, मतलब प्लेनर मोशन के अंदर के काइनेमेटिक इक्वेशंस चाहिए डिफरेंशियल फॉर्म में, जो कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होता है तब यूज किए जा सकते हैं, तो वो है a बार इज इक्वल टू dv bar by dt. The second one will be v bar is actually equal to dr bar by dt, and the third one will actually be equal to a bar into dr bar is equal to v bar into dv bar. Okay, so this is the third kinematic equation in vector form, and it is to be used only when acceleration is not constant. Remember, and इनके component form भी हमको मिल सकते हैं आराम से. components form जो है तो वो तो easy है, सिर्फ यहाँ पे ax will be equal to dvx by dt, जो कि हमको already पता है, and this will be ay is equal to dvy by dt. Similarly we can also express this. अभी ये जो है, ये जो है ये दोनों इस अकेले के component form हो गया, समझा ठीक से. और इसका जो कंपोनेंट फॉर्म है वो हमको मिलेगा इस तरह से, यहाँ पे ये देखो, vx is actually equal to dx by dt, and in the same way here vy will actually be equal to dy by dt. Okay, these are the component forms of this equation here. Okay, second equation. and third equation का भी component form हमको मिल सकता है आराम से, तो उसके लिए हमको देखना पड़ेगा a into dx, या simply we can say a is equal to v into dv by dx, dvx into dvx by dx, and here it will be, ये भी ax के लिए मिलेगा हमको ax, और दूसरा बनेगा ay के लिए, जो कि vy into dvy by dy. Okay, these are the component forms of third kinematic equation in vector form, which is to be used only when acceleration is not constant and we have the planar motion or two-dimensional motion. Let us move further in this chapter. Okay. So इसके बाद क्या देखा हमने, सर्कुलर मोशन देखा, राइट है ना. सर्कुलर मोशन, तो सर्कुलर मोशन के अंदर सबसे पहला फॉर्मूला कौन सा आ जाता है, थीटा, दैट इज द एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस. ओके, आर्क अपॉन रेडियस, or you can say the small angle delta theta will actually be equal to small arc length delta s upon the same radius. So if we have a circle like this, ये suppose हमारे पास सर्कल है,
एंड सपोज यहाँ से एक पार्टिकल स्टार्ट करता है और यहाँ तक चला जाता है, तो उसका जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इस आर्क लेंथ को रेडियस से डिवाइड करना पड़ेगा, बिल्कुल सिंपली। तो ये हो गया फॉर्मूला फॉर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इसको बोलते हैं। एंगुलर वेलोसिटी के लिए क्या फॉर्मूला है, उसमें भी दो आता है, एक होता है एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, दूसरा होता है इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। So if we talk about the average angular velocity, then omega average will actually be equal to theta upon time t, total angular displacement upon total time interval, or we can also express it as delta theta upon delta t, okay, or we can also express it as theta 2 minus theta 1 upon t2 minus t1, no doubt. But the average instantaneous angular velocity omega is actually going to be equal to d theta by dt, which is the limit of this delta theta by delta t as delta t tends to 0. So here is going to be d theta by dt. It is the derivative of theta with respect to time, remember. So this is the definition of instantaneous angular velocity, remember. This is all about the instantaneous angular velocity. Next is about instantaneous angular acceleration. उसमें भी दो आते हैं, एक होता है average. So if we talk about average angular acceleration, then it will be actually omega 2 minus omega 1 upon t2 minus t1, or we can also call it as delta omega upon delta t, or simply we can simply say it as omega minus omega naught upon t. That's it. So जैसे v minus u upon t होता है, सेम वैसे ही omega minus omega naught upon t, where omega naught stands for initial angular velocity and omega stands for final angular velocity, whatever it may be, and t is going to be the time. Okay, so this is the average angular acceleration, and instantaneous angular acceleration is actually going to be equal to d omega by dt, which is nothing but the derivative of omega with respect to time, remember. So instantaneous angular acceleration will be d omega by dt, which is actually the limit of omega, limit as delta t tends to 0 of delta omega by delta t. Yes, so this is actually going to be the angular acceleration, no doubt. And what is the relationship between the linear velocity and angular velocity? So we have that v is equal to r into omega. This is the relationship between the linear velocity and angular velocity, remember. And also we have seen that the angular velocity omega is, yes, time period जो होता है, time period का फॉर्मूला क्या है, 2 pi r upon v, ये एक फॉर्मूला है हमारे पास। और दूसरा और एक फॉर्मूला हमारे पास मिलता है जो होता है 2 pi by omega. These are the formulae for time period of revolution of any particle performing uniform circular motion. And at the same time, frequency of revolution can be written as either v upon 2 pi r, and this frequency can also be written as omega upon 2 pi, which is the reciprocal of period. So frequency is always the reciprocal of period, remember. And at the same time, the omega can also be expressed in terms of period and frequency. Omega will be expressed as 2 pi by 2 pi by t. ये फॉर्मूला को अगर हम जस्ट रीअरेंज करेंगे, थोड़ा शफल करेंगे, तो ये हमको मिलेगा. और इन द सेम वे ओमेगा कैन बी रिटन टू बी इक्वल टू 2 पाई इंटू n. अगर ये वाला फॉर्मूला शफल करेंगे थोड़ा, तो हमको ये वाला फॉर्मूला मिल जाएगा, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई n, no doubt. And also we can express velocity also in terms of period and frequency. See how? Because we have this v equal to r omega, right? तो r इंटू ओमेगा, ओमेगा का ये फॉर्मूला अगर यहाँ पे डाल दो तो वेलोसिटी के लिए क्या मिलेगा हमको, 2 पाई r अपॉन t, करेक्ट है. एंड एट द सेम टाइम वेलोसिटी के लिए और एक फॉर्मूला हमको मिलेगा, क्योंकि ओमेगा के लिए हमारे पास ऑलरेडी 2 पाई n है, तो वो ओमेगा का वैल्यू अगर यहाँ पे डाल दो तो हमको मिलेगा 2 पाई r n, राइट. So this is 2 pi r into n. This is again the formula for velocity in terms of frequency directly. Okay. What else? और क्या किया था हमने? Centripetal acceleration in case of the uniform circular motion, right? So the centripetal acceleration
in case of uniform circular motion, AC will be expressed as R into omega square, or it can also be expressed as V square upon R, or it can also be expressed as V into omega. So all these three are the formulae for finding this centripetal acceleration in terms of omega, V and in terms of V and omega. चलो ठीक है, उसके बाद फिर सेंट्रीपिटल फोर्स का भी फॉर्मूला हमने देखा था, देखो FC उसको हम बोल सकते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स which is actually going to be equal to mr omega square, or it may be equal to mv square upon r, and it may be actually equal to mv omega. Okay, so these are the formulae for centripetal force, and even centrifugal force के लिए भी सेम ही फॉर्मूले बनते हैं यात्रागोटिक से. तो centrifugal force can also be expressed in the same way by using the same formulae, mr omega square, mv square upon r, or mv omega, no problem. And all these values of omega here and here can be replaced here at any time. इधर किधर भी हम ओमेगा के लिए ये वाला वैल्यू रिप्लेस कर सकते हैं उसका, no problem. Yes, go to the next. और क्या देखा हमने इस चैप्टर में? Conical pendulum, बराबर? The time period of conical pendulum we have seen already. So what is the time period of conical pendulum? T is equal to 2 pi root L cos theta upon G, correct है? Or we can also express it as in terms of the height, that is 2 pi into root of H by G. Okay, तो ये suppose conical pendulum है, ये ऐसे horizontal circles में वो revolve कर रहा है, ठीक है? तो ये बनता है उसका height, ये बनता है उसका radius, और ये बनता है string का length, और ये बनता है सेमी वर्टिकल एंगल थीटा, उसको हम बोल सकते हैं. और इन तीनों के बीच में भी एक रिलेशनशिप होता है. देखो एच एल एंड आर के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है, हमेशा याद रखो, एल स्क्वायर इज एक्चुअली इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर. सो दीज आर द थ्री, दिस इज अ रिलेशनशिप बिटवीन एच आर एंड एल as it is. It is obtained by the Pythagoras theorem only. And even we can also express H and R in terms of L easily, because H can be written to be equal to L into cos theta, and R can be written to be equal to L into sin theta. ये भी याद रखना है अच्छी तरह से. L is the hypotenuse. So if we resolve this L into components, then L का projection मतलब vertical component क्या बनेगा, H बनेगा. मतलब H को हम लिख सकेंगे L cos theta, बराबर. और सेम वैसे ही R जो है, तो वो ऑपोजिट साइड है ना इस थीटा का, इसलिए इस हाइपोटेन्यूज के फॉर्म में उसको कैसे लिख सकेंगे, तो R can be written to be equal to L into sin theta. Both of these can be proved by using the definitions of sin theta and cos theta, no doubt. And what is the tension in the string in case of conical pendulum? तो T dash उसको हम डिनोट करते हैं, तो it can be expressed as mg into root of 1 plus r by h और उसका whole square, correct है? So this is the formula for finding the tension in this string in case of conical pendulum. And जो दो equations बनते हैं वो भी हमको पता होने चाहिए. कौन से दो equations मिलते हैं हमको conical pendulum के केस में? ये देखो, एक ये mg जो है तो वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम कर रहा होता है, FC जो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वो आउटवर्ड डायरेक्शन में काम कर रहा होता है कॉनिकल पेंडुलम पे, और जो टेंशन है स्ट्रिंग के अंदर का वो अलोंग द स्ट्रिंग इस डायरेक्शन में काम कर रहा होता है. ये देखो ऐसे डायरेक्शन में, इसको हम बोलेंगे T dash, राइट? सो दिस T dash कैन एक्चुअली बी derived resolved into two components. One of its components will be vertically upwards, and since this is theta, we can call this as T dash cos theta, right? And this horizontal component here will be denoted by T dash sin theta, correct है? T dash sin theta. So we can construct the two equations here, that is T dash sin theta is equal to mv square upon r, or mr omega square, okay? And the second equation can be constructed as T dash cos theta is equal to mg. Vertical equilibrium अगर यूज करेंगे तो हमको मिलेगा T dash cos theta is actually equal to mg.
And using these two formulae, we can also find out the velocity of this conical pendulum, linear velocity, which is going to be actually equal to root of r g tan theta. If you remember, we have derived this formula also in the regular discussions. Okay, next is about, and angular velocity can also be found out of this conical pendulum. Angular velocity of conical pendulum can be written to be equal to root of h by g by h. Okay, root of g by h. ये भी याद रखो, angular velocity of this conical pendulum. Yes. So all these are the formulae for conical pendulum. We can go to the next, that is about the projectile motion now. Okay, इसी चैप्टर के अंदर हमने projectile motion का जो concept है तो वो भी study किया already. So in that we have seen already that in case when the projectile motion is studied, the equation of trajectory of this projectile, suppose एक projectile जो है तो वो अगर हमने यहाँ से origin से fire किया इस direction में u velocity के साथ, जो कि horizontal के साथ थीटा इतना एंगल करता है, तो ये प्रोजेक्टाइल जो है वो इस पाथ से गुजरेगा और इस तरह से एक पॉइंट पे वो हाईएस्ट पॉइंट पे चला जाएगा और फिर आगे चल के एक पर्टिकुलर पॉइंट पे हिट करेगा ग्राउंड को. ओके, तो ये पॉइंट को अगर हम बोल देते हैं सपोज ओ, ओरिजिन होने की वजह से उसको ओ बोल देंगे, और ये जो हाईएस्ट पॉइंट है उसको बोल सकते हैं ए और इसको बोल सकते हैं बी. यस, तो अब यहाँ पे ये जो वर्टिकल हाइट होता है, मैक्सिमम हाइट जो होता है उसका, तो ये बनता है एक्चुअली कैपिटल H. ओके, and the horizontal distance, maximum horizontal distance traveled by this projectile is denoted by the range of this projectile, which is denoted by capital R. And the time of flight is nothing but the time taken by this projectile to complete the journey. पूरा जर्नी कंप्लीट करने के लिए जो उसको टाइम लगता है उसको बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट. ओके, तो इसमें ये जो u है, तो u के जो दो कंपोनेंट्स हमको मिलते हैं तो वो कौन से होते हैं, ux and uy. तो what is ux actually? It's going to be u cos theta, correct है? And what is uy here? It is u sin theta, right? So these are the two components of u. Then here the equation of trajectory of this projectile can be written to be equal to y is equal to x into tan theta minus half into gx square upon u square cos square theta. ये फॉर्मूला अच्छी तरह से याद रखो. This is the formula for equation of trajectory of the projectile, remember. And this equation can also be written in terms of r. Check, if we take x tan theta common from this whole bracket, then we are left with 1 minus x by r inside. So this is another formula of equation of trajectory of this projectile, remember. The next here is about the range of projectile. What is the formula for range of projectile? It is u square sin 2 theta upon g. And what is the formula for height of the projectile? So maximum height of the projectile is actually going to be equal to u square sin square theta upon 2g. See the difference? यहाँ पे difference देखने में आ रहा है. यहाँ पे u square तो है, यहाँ पे भी u square है, no doubt. But इसके साथ यहाँ पे sin 2 theta है, जबकि यहाँ पे sin square theta है. Don't get confused. 2 और square, और यहाँ पे ऊपर से 2 भी है नीचे, right? जबकि यहाँ पे कुछ भी नहीं है नीचे, सिर्फ g है नीचे डिनोमिनेटर में. Okay, so that is the difference. We have to note that carefully. And finally, the time of flight can be written to be equal to 2u sin theta upon g. It's that simple. So time of flight can be written to be equal to 2u sin theta upon g. Yes, we can also express this range of projectile in terms of ux and uy. See how it will be expressed as 2 times of ux into uy upon g. ओके, ये भी एक फॉर्मूला याद रख लो. मैक्सिमम हाइट के लिए भी यहाँ पे याद रख लो uy स्क्वायर अपॉन 2g. ये सिंपल सा फॉर्मूला हमको मिलता है हाइट, मैक्सिमम हाइट के लिए. और टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए भी एक फॉर्मूला मिलता है जो कि 2 टाइम्स ऑफ uy अपॉन g. ओके,
Yes, this is the formula for time of flight. And no doubt, time of ascent and time of descent can be easily obtained because we know that they are just half of this time of flight, right? So time of ascent or time of descent can be written to be equal to uy upon g, which can also be written to be equal to u sine theta upon g. Okay. And one more thing it is to be remembered here is that the range of the projectile is maximum only when काही नाही ही मोकरम ठेवलेलं yes. So here we have seen that this TA is equal to TD, which is going to be equal to uy upon g, and that is also equal to u sine theta upon g, right? So these are the formulae, and also that is range of projectile is maximum only when theta is going to be 45, correct है? थीटा 45 होने से रेंज जो है वो मैक्सिमम बनता है, याद रखो ठीक से, ओके। और ये भी कि जब थीटा 45 होता है तब रेंज जो है, मैक्सिमम रेंज जो होता है वो उस समय के हाइट के 4 गुना ज्यादा होता है, 4 टाइम्स होता है, ये भी याद रखो ठीक से, ठीक है? रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज 4 टाइम्स द maximum height of the projectile when theta is going to be 45, remember, okay? And that's all about the projectile motion, right? So all these are the formulae from this chapter, just be revised, be learned all these formulae so that we can continue with the numericals next time, okay? आज मैं आपके ऐप में एक असाइनमेंट शेयर करने वाला हूँ, इस चैप्टर के ऊपर एक असाइनमेंट होगा, it will be of 100 marks, and it will include all the important numericals and important questions, theory questions from this chapter. So you have to start solving this assignment today only. So and you will just ask the doubts as this assignment goes further. जैसे जैसे आगे बढ़ते हो तो वैसे वैसे आपको कुछ डाउट्स आएंगे जरूर, उसके अंदर के जो न्यूमेरिकल्स है या बहुत सारे जो क्वेश्चंस है, तो कुछ क्वेश्चंस सिंपल है, जो सिंपल क्वेश्चंस है वो तुम कर सकते हो आराम से, बट जो थोड़ा डिफिकल्ट है या जो थोड़ा जिसके लिए थोड़ा सा सोचना पड़ता है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, तो वो क्वेश्चंस के बारे में डाउट्स जो है तो वो हम डिस्कस करेंगे सो नेक्स्ट लेक्चर में। और ये भी इस चैप्टर के अंदर के जो टेक्स्ट बुक के जो न्यूमेरिकल्स है तो वो भी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। चलो ठीक है, अभी 5 बजे मेरा ही लेक्चर है एक्चुअली, बट इट इज जेई नीट एक्चुअली, तो जेई नीट के लेवल पे हम यूनिट्स एंड डायमेंशंस चैप्टर कवर करने वाले हैं। ओके चलो ठीक है, फिर ये लेक्चर मैं यहाँ पे एंड करता हूँ। थैंक यू ऑल ऑफ यू।